Okay, so I'll go ahead. Right, kids? Yes, sir. Yeah. चलो ठीक है. Yeah. Okay, so I've done 2-3 sums. You can just go to recording. Okay. ठीक है ना? Can I start? Can I start? Yes, sir. Okay, so we have the next question here. Okay. Your f of x is continuous and increasing function given such that the domain of g of x is given something here, and that is r, and h of x is given as 1 upon 1 minus x, and they're asking us find the domain of phi of x. Find the domain of phi of x. Okay, by the way, I have just taken 2 sums now. तो आप लोग वो देख लेना, ठीक है? Yes, sir. चलो, yeah. चलो, ओके. नाउ किड्स, सबसे पहले उन्होंने phi of x का डोमेन पूछे. एक्चुअली बहुत ही एक इजी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं कैसे. सी हियर इट इज h of x. तो पहले फाइंड कर लेते हैं. नाउ सी h of x इज 1 upon 1 minus x. So if I replace x with h of x, then here in place of x, h of x will come. Do you agree? Yes, sir. And in place of h of x, I can add 1 upon 1 minus x. 1 minus x. Yes. Okay, then 1 minute. Okay, 1 minute. Yeah. Now I can take an LCM. So what I get here is ऊपर आ गया 1 minus x, नीचे आ जाएगा 1 minus x minus 1. तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो आपको जो मिलेगा वो है h of x, और यहां पर आ गया 1 minus x upon minus x. तो आपको मिलेगा h of x is equal to क्या आ जाएगा पता है? x minus 1 upon x. Is it okay? Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Now again I'll say h of x. So मैं x के बदले वापस से लिख रहा हूं h of x. तो यहां पर भी x के बदले h of x आएगा. भाई h of x क्या है? h of x आपका 1 upon 1 minus x है. तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए 1 upon 1 minus x minus 1. नीचे भी आएगा 1 upon 1 minus x. तो यहां पर आएगा h of x. Let's simplify this. यहाँ पर आएगा 1 minus 1 plus x, और ये टर्म कैंसिल होकर अपॉन 1 आ जाएगा. तो 1 गया. तो गेट h of x is x. Is it okay? Yes, sir. But before we go ahead, some few things to take note of it. By looking at this, I can straight away say x cannot be 1. Is that true? Yes, sir. By looking at this, I can straight away say x cannot be 0. Is it true? Yes, sir. Yes. So when I get h of x, I have the basic condition what? X belongs to any real number except 0 and 1. पक्का चलेगा? Yes, sir. Okay, तो ये क्लियर हो जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बोला है कि domain of g of x is it's an increasing function, they are saying. Okay, और domain of this is such that the domain of this be R. अब पहली बात तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए. यहां पर देख लो आप लोग. You all will agree with me that f of x minus x should be greater than or equal to 0. Is that true? Yes, sir. So f of x will be greater than or equal to x. Does that make sense? Yes, sir. Actually आंसर मिल ही गया हम लोग को, बट फिर मैं आपको और भी बता रहा हूं. Now here it is f of x. So I'll replace x with f of x. So I get here x के बदले f of x. Is that true? Yes, sir. But already I know from here f of x is greater than equal to x. So this will be greater than equal to x. Is that true? Yes, sir. So I have got here f of x is greater than equal to x. चलेगा? Yes, sir. Good, very good. Similarly, again, replace x with f of x. Greater than equal to. यहाँ पर भी f of x आ जाएगा, चलेगा? Yes, sir. But already I have. Again, I have. एक मिनट क्या? Already I have from here.
Can I say this will be greater than or equal to x? Is that true? Yes, sir. Yes, sir. So I am getting here f of x greater than or equal to x. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I'll just go to the next slide. Huh? So f of x greater than or equal to x, so it is minus x greater than or equal to 0. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. But already I have x. Now what is x equal to? H of x. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So I'm getting here f of x. This is h of x is greater than or equal to 0. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर रूट है तो मैं रूट भी लिख लेता हूँ. चलो मैं रूट लिख लेता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Is it okay? Yes, sir. Yes, But sir. already I have a condition at the back of my mind. What is the condition? Your x can belong to what? All All real real numbers numbers except except zero Except 0. 0 and 1. Does that make sense? Yes, Yes, sir. sir. So it's so clear. So that was they are asking. Option Domain of C. phi of x. It has to be option C only. Does that make Yes, sir. sense? Yes, sir. Such a beautiful problem. H of x given, find h of x. Again find h of x. And but keep this thing in mind. People forget this. Now you find f of x minus x will be greater than or equal to 0. So again, but I want f of x. So first write x के बदले f of x. तो यहाँ पर भी वही आ गया. But already f of x is greater than or equal to x. तो यहाँ पर equal to x आ जाएगा. तो automatically this is so true. Again do the same thing. And this x goes on the left hand side. Already x is this. तो लेफ्ट हैंड साइड पे गया और फिर हमने इस x के बदले इसको लिख दिया ये वाला टर्म. And of course the condition does not change. Is it okay, kids? Yes, sir. Good. ठीक है, आगे बढ़ते. They've given me something. Number of linear functions. They are saying a number of linear functions satisfying this condition. The condition given is f of x plus f of x equal to x plus f of x. सबसे पहले I'll do one thing. Since f of x is a linear function, and a number of linear function, right? F. So let me call at the back of my mind that f of x is nothing but ax plus b. Will that do? Yes, sir. Yes, sir. Good. अब आगे बात करते हैं. अब सवाल ये है, यहाँ पर बोला है, अभी उन्होंने क्या किया, आप ऐसे समझो. क्या किया पता है उन्होंने ऐसे समझ लो कि उन्होंने अभी पहले आप इस x f of x के बदले वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा पता है? f of x प्लस f of x क्या है? ax प्लस. AX plus B. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका f of x हो जाएगा ax plus b. Will that do? Yes, sir. Yes. Good. So what I'm getting here is f of x plus ax plus b is equal to x plus ax plus b. I'm just writing the same thing. Okay, same thing I've written. अब ध्यान देना. This is f of x है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. So मैं क्या करने वाला हूँ? Now I want, see ना, focus here. इसके बदले ध्यान से देखना, इसके बदले ये x है तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ये चाहिए तो in place of x I'll replace this. So what I'll get here on the left hand side? This is f of x, right kids? Yeah. See, f of x is ax plus b. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो मैं मुझे ये वाला टर्म चाहिए. I want this guy on the left hand side. Just focus on the left hand side. Nothing on the right hand side. So can I write here in place of x? In place of x. In place of x, can I write x plus ax Yes. plus b plus b? Does that make sense? Yes, sir. पक्का ना? I'm trying to get f of this. So मैंने यहाँ पर x के बदले x plus ax plus b लिखा है. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Now see what happens. The sum is almost done. Ax plus a square x plus ab plus b is x plus ax plus b. Now what happens here? Your ax will disappear, your b will disappear, and finally you are left with what? You're left with a square x plus ab equal to x. Is that true, kids? Yes, sir.
Okay, now can I write here x the coefficient is 1 and here I'll write something like plus 0? Will that do? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. It's a linear term, right? So ऐसे लिख दिया मैंने. Now I'm gonna compare. So if I compare x का coefficient, or can I say x का coefficient is a square equal to 1? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. And AB will be 0. So A will become plus or minus 1. Will that do? Yes. Yes, sir. And A is a non-zero term, so A disappears. So B becomes 0. हाँ के नहीं? Yes, sir. So how many linear terms will I get? 2, sir. 2. Of course, I should get 2 linear terms, and it is very much clear. You can see in front of your eyes. There are 2 linear terms possible. A का 2 value है, B 0 है आपका. Is it okay? Yes, sir. Okay, so देखो मैं समझा रहा था आपको समझ रहा होगा, लेकिन ये खुद से करने में कितना गड़बड़ हो जाता है ना. Yes. Yes, प्रॉब्लम तो sir. यही है कि जब खुद से करते हैं ना तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. ठीक है. ओके ओके आगे बढ़ते हैं. Okay. F be an odd function defined on the set of real numbers. F is defined on real. Odd function है. Odd function मतलब क्या है? Symmetry about origin है ना kids? Yes, sir. Such that for x greater than or equal to 0, function defined. So this function that you see is defined. This defined फिलहाल for the time being only for x non-negative है ना kids? अरे हाँ के नहीं? अरे हाँ के नहीं kids? Yes, sir. And they are telling you find function का value at x equal to negative value. Now the problem with this thing is x equal to negative is not known. Do you agree kids? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें ये ढूंढना पड़ेगा. Does that make sense? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें ये ढूंढेंगे कैसे? मिलेगा, obviously मिलेगा. Since f is an odd function, you all will agree with me. What? F of minus x F is of- minus f of x. Minus of x will be f of x. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. पक्का. तो हम Yes. क्या करेंगे आप देखना हम लोग क्या करने वाले हैं. I'll tell you what are we gonna find. So our function will be this guy है ना kids for the negative. Do you Yes. understand? So I'll try finding this guy. Can I find this guy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Of sir. course we can find this guy. चलो find करते हैं. पहले हम x के बदले minus x लिखेंगे. तो अगर मैंने x के बदले minus x लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा x के बदले minus x. Minus x. minus 3 sin x. और जब x के बदले minus x लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा plus Plus 4. 4 cos x. Do you understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But I want minus of that. So I say minus of f of minus of x. So I get here minus multiply करें यहाँ पर आएगा 3 sin x minus 4 Minus cos 4 x. cos x. Do you understand kids? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. if this is your f of x, so this guy, this is x suppose. So this guy will be, of course, this is minus, right kids? Minus. Yes, It is sir. minus of f of minus F of- x. Do you agree? अरे do you agree? The height. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I found out. So ये जो white में जो दिख रहा है ना, ये जो white में जो दिख रहा है, वही यहाँ पर आना चाहिए. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो white में जो दिख रहा है वही यहाँ आना चाहिए. तो आपको मिलेगा 3 sin x minus 4 cos x. इसको बोलते हैं एक्सटेंशन. याद है? ऑड इवन एक्सटेंशन याद है आपको? Yes, sir. एक्सटेंशन कैटेगरी हमने एक सम बताया था मैंने आपको. बस अभी आपको खत्म करना है. और क्या अभी? You have x equal to minus 11 pi by 6, which is actually nothing but minus 330 degree. है ना kids? Yes, sir. So now let's put it. And let's see what is the answer. I'll just go to the next slide, okay? So आपका f of x यहाँ पर है 3 sin x minus 4 cos x. Yeah, minus 330. So 3, of course this is minus 330. Yeah, हमको minus 330 का. चलो you all tell me orally. Minus 330 कहाँ पर आएगा? First quadrant. 30. What is sin Yes, 30 sir. का value? Half. Is it okay? अरे हाँ के नहीं? Yes, yes, sir. This was the first quadrant 30. That is root 3 by 2. Is it okay?
So 3 by 2, this is minus 2 root 3. So 3 by 2 minus 2 root 3. 3 by 2 minus 2 root 3. Yeah. I hope this is clear, kids. Yes, sir. Sir, Yeah. what if the function was like even? Then what would have been the equation, like the f of x wala? F of minus x आ जाता ना खाली, Yes, sir. Okay, yeah. है ना? Mm-hmm. Yeah. चलो, let's move. Step x हम सबको पता है क्या होता है. We already know this. They've given something interesting. This is n square plus lambda equal to under root of n square plus 1 plus 2. Okay, given है by the way. और बोला है lambda can assume what value? What values the lambda can assume? Basically ये आपका question है. तो सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे? फिर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ किड्स. देखो ये सब बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं. दे आर बेसिकली डिफिकल्ट कैटेगरी प्रॉब्लम्स. हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है सब सम्स. तो हमें लैम्बडा हमारा फोकस है. सबसे पहले हम इस पे थोड़ा बात करते हैं. डू यू एग्री n square plus 1 will be less than n square? Do you agree, kids? Yes, sir. Yes, sir. And this will be less than n square plus 1 plus 2n. चलेगा? Yes, sir. And n is a natural number by the way. Of course, you all can ask me कि सर 2n कहाँ से आ गया? बताता हूँ मैं. So n square will be less than n square plus 1 less than n plus 1 the whole square. Is it clear? Yes, sir. Okay, now since there is a root sign, so I'll take a root. Okay, so I'll take a positive value only. I think you all know already. Because n is a natural number. So I'll get n here. I get under root of n square plus 1. I get n plus 1. Now, did you understand why I took 2n? Yes, sir. Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. So now I think if I talk about step function, if I talk about step of under root of n square plus 1, तो उसका step क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? N. Tell me. It is n. Do you agree? Yes, sir. Confident, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now let's talk about this guy. So I have got that this guy is nothing but n. So let me go to the next slide. So it's under root of n square plus lambda is equal to a step function है by the way. ये इसका वैल्यू मुझे मिल गया, वो n है तो n plus 2 हो गया. It's n plus 2. Is it clear? Yes, sir. So now, okay, if this step is this, now suppose if I say step of x is suppose 3, I think you all know x is between what to what? 3 to 3 4. and 4. Do you agree? Yes, sir. So can I say from here, under root of n square plus lambda should be, the minimum value should be n plus 2, Plus 2. and it can go till n plus 3. Does it? Yes, Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. But kids, my focus is lambda. So I'll do one thing. I want lambda. I'll do squaring both sides. So if I do squaring, I get n plus 2 ka square. I get n square plus lambda. And I get n plus 3 the whole square. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So I get n square plus 4n 4n. plus 4. यहाँ पर आएगा n square plus lambda. यहाँ पर आ जाएगा n square plus 6n plus 9. So automatically I can say my n square should disappear from the picture. So my lambda ka value will range between 4n plus 4 and 6, sorry, equal नहीं आएगा, 6n plus 9. Is it okay? Yes, sir. So now what they are asking, lambda की कितने value assume कर सकता? How many different values it can assume? Can I say from here the different values of lambda is, देखो अगर किसी ने बोला lambda is between, I just give an example, suppose 4 to 9. So how many different values are possible for lambda? 4, 5, 6, 7, 8. Do you agree? Yes, sir. So lambda का different values क्या हो जाएगा? I can say 9 Subtract the minus 2. limiting. 9. Do you agree? Yes, sir. So here lambda ka value will be, different values will be 6, 6 9 and plus. 9 minus
4n 4n. plus 4. So what I'll get? 2n plus 5 should be the different values of lambda. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very nice, very nice. Okay, kids. So kids, beautiful problem ना kids? ऐसे स्टार्ट करना ही इतना आसान नहीं होता है. पहले तो ये है. सबसे पहला सवाल ये 2n ऐड करना है, वो भी नहीं पता चलेगा. बट आपको शायद समझ गया होगा क्योंकि मुझे इसको ना n और n प्लस 1 के बीच में लाना था ना, इसके लिए ऐसे किया था मैंने, है ना किड्स? Yes, sir. Yeah, good. Let's move. आप लोग ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है ना? Yeah, sir. We saw that. क्योंकि अगर वो नहीं किया होगा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा. आई एम टेलिंग यू ऑल. ओके, आगे के सम्स. या h of x is given. Domain of f is this. That's what they are saying. And the domain of this is this. That's what they are saying. Okay, something interesting. Okay. Again. The range of h of x is the same as the domain of f of x. Okay. Range of f of x. So can I say range of f of x मतलब ये बंदा, this guy, है ना kids? Range मतलब कि h of x ना kids? Yes, sir. Range is same as the domain. और इसका domain क्या है? -5 to Minus 7. 5 to 7. Do you agree? So Yes, range of h is same as the domain of f. Does that make sense? Yes, sir. And thanks to this statement, they are saying iska domain. That is x ka value they are saying is -6 to 1. है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. Now let's work on it. Mod ka minimum value is non-zero, is 0. Is it okay? Yes, sir. So I can straight away say my kx plus 5 should be between what to what? -7 to 7. -7 to 7. Yes. Now subtract by -5, so I get -12 less than equal to kx less than equal to 2. Is it clear? Yes, sir. But you can just check this out. Your x ka value is between -6 to 1. So try getting -6 to 1. So I can divide by 2. Is it clear? 2. Yes, sir. I get -6 less than equal to k by 2x less than equal to 1. Is it okay? Now can I straight away say my k by 2 should be 1? Hai ki nahi? Yes, sir. Yes, sir. By looking at both of them, I can understand that my k by 2 should be equal to 1 straight away. And therefore, my k ka value should be 2. So, Yeah, tell me. like, can we do, like after that step -12 is less than, we can say, right, like k is equals to 2, so 2x and then 2 you can divide by both. वही हो गया ना? हाँ sir, वही हो, but आप वो we can do that also, right, like. हाँ, अरे मेरे काम समझाना है. तुमको जैसा समझना समझो और करो. गेट द आंसर. Okay, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. चलो. The range of f is given to you. इसका रेंज है -1 to 1. अभी तो एवरीबडी नोस कॉस का रेंज क्या होता है? -1 to 1 ही होता है ना? Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट नहीं भी दिया होगा तो कुछ मतलब नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k. ओके, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको y बोल के रखता हूं. ठीक है. So I can write this as cos inverse of y equal to k sin x. चलेगा? चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. So cos inverse of y upon k will be equal to sin x. Do you agree? Yes, sir. Now kids, you all tell me, what is sin x का value between what to what? -1. -1 to 1. It is so clear. तो आपका भी sin x का वैल्यू क्या है? It's cos inverse of y upon k. Between what to what? Between -1 to 1. Is it okay? Yes, sir.
Now, so it is minus k less than equal to cos inverse of y less than equal to k. Do you agree? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. But do you agree, kids? Cos inverse का वैल्यू जो होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है? 0 to pi. Do you agree? Yes. Yes, sir. तो अगर ये 0 to pi के बीच में है और क्या आपका लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लीस्ट, तो आपके हिसाब से k का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 to 1. क्या होना चाहिए? 3, sir. 3 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए? अरे दिस इज बिटवीन दिस, सो दिस गाइस बिटवीन दिस टू दिस, सो k का लीस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या हो सकता है? या I can't take 3 because 3 Yeah, it won't get Yeah. fulfilled. I can't take 3. अरे समझा क्या? 4 ना set will fulfill ना. 4. अरे मेरा भाई ये वैल्यू आपका 0 to 3.14 के बीच में है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. तो आप बताओ फिर k का वैल्यू क्या होना चाहिए? लीस्ट 4 ना पॉसिबल, sir. इट हैज टू बी 4. इज इट क्लियर? 3 होगा तो fulfill ही नहीं होगा ना condition. अर्जुन पुतली समझा तेरे को? Yes, yes, sir. है ना? 3 नहीं चलेगा, k हैज टू बी 4 ओनली, है ना? So can you explain once again? Yeah, I was saying you understood the initial part, right? Yes, So, sir. Yes, but like- only from the last part, the blue one. Now see, I have got cos inverse of y is between minus k to k. Is it true? Yes, sir. But already I know cos inverse of y is between 0 to pi. Yes, sir. पक्का ना? हाँ हाँ. तो cos inverse का वैल्यू जो है वो 0 और 3.14 के बीच में है. Yes. तो अगर ये वैल्यू 0 और 3.14 के बीच में है और ये माइनस 3 टू k है, तो k का वैल्यू जो लीस्ट पॉसिबल इंटीजर है वो क्या हो सकता है? 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होगा तो ये तो अंदर आ गया फिर. Yeah. इससे Yeah. इमीडिएट बड़ा होना चाहिए, तभी जाके इसके अंदर आएगा ना. Yeah. So k is always greater than 3.14. So Of it course, should it be. has to be, ना? It has to be. Yeah. Yeah. What is the least possible integer? 4. है Got ना? it, sir. या पॉजिटिव इंटीजर 4 होगा, है ना किड? Yes, sir. Yes, sir. या गुड. So, but it's like less than equal to. So it can like k can also be 4, but then that wouldn't be right. Yeah. What are you saying? So it's like less than equal to k. So but हाँ. like sir, if k ka value can be 4, but then that wouldn't be right. K का value can be 4, but that's not a problem. For me, I'm just supposed to find k का value only. Oh, okay, sir. I'm just supposed to find k का value. What is the least possible k? It has nothing to do with this then. Oh. K, अरे cos. So basically, the the range where your range of cos inverse of y will fall in, no? Yeah, fall in. Yeah, it should fall in. Yeah, Ah, okay. it should fall in. ठीक है ना? Is it okay? Yes, yes, sir. Yeah. Yes, good. sir. Yeah. Next, the number of solution of y plus step functions है. ये सारे step functions है. और उन्होंने y भी देके रखा है. y क्या वो भी देख लेते हैं. y equal to 1/3 step of sin x ओके. ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, तो थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं. पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं. Step of x plus some integer is there. It is always equal to x plus step of x plus integer. Is that true? ये रिजल्ट पता होना चाहिए आपको, है ना किड्स? Yes, sir. Step of x plus integer always step of x plus integer. Yes, sir. So now is this an integer? Yes, sir. What I'll get here, step of y plus ये बाहर आ जाएगा integer. Is that okay? Yes, sir. Yes, yes. So it becomes twice of step of y. So I get step of y is equal to cos of x. Now this should make sense. Clear? Yes, sir. Next, similarly. Again, this is an integer, this will come out. So I get step of sin x. सबसे पहले हाँ, पहले stepwise. We'll go stepwise. First,
Is this an integer? Yes, sir. So this should come out. I think you all know, but still I'm writing it down. It will come 3 times only, by the way. Yeah. Now, this is an integer, so this will come out, है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. So step of sin x plus step of sin x plus step of sin x. Step of sin x. So I have got how many times sin x? 3. 3. I have got 3 times of step of sin x. So I get y equal to step of sin x. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So y is step of sin x. I'll just put it here. Huh? Just put it inside. Just see what will happen. So inside your y, I'll write step of sin x. Now, step of sin x ka step is again step of sin x only. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So I have got step of sin x equal to cos x. This is my final equation. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. And मुझे number of solution find करना है. Can we draw दोनों का graphs? हाँ, sir. Yes, sir. बस ग्राफ बनाओ, पिक्चर खत्म. देख लो आप. आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा इसका. You all know by the way the graph still. Yes, step of. Okay. This is 0. That's pi. That's 2 pi. This is 1. That's minus 1. Let's go ahead. Now, of course, pi by 2 लिखना जरूरी है और 3 pi by 2 भी लिखना जरूरी है. पहले मैं स्टेप sin x बना लेता हूँ. सपोज मैं ब्लू लाइन में बनाता हूँ. तो स्टेप sin x कुछ ऐसा होता है. ये ऐसे जाएगा. यहाँ हॉलो सर्कल आता है. Yes. Good. फिर बाद में यहाँ पर डार्क सर्कल आ जाएगा. Yes. यहाँ पर हॉलो सर्कल, यहाँ पर हॉलो सर्कल, यहाँ पर आ जाएगा डार्क सर्कल. ये बेसिकली है. और इंटरेस्टिंगली आप cos x का ग्राफ देखना, वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा. देखना आप, इट विल नॉट इंटरसेक्ट ओनली. सी cos x ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और जहां पर हॉलो सर्कल है वहां पर आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगेन हॉलो सर्कल में आएगा, यहाँ आएगा. So can I say it is not intersecting only? Do you agree? Yes, sir. Yes, And it sir. will go on. It will never intersect only. Never intersect. मतलब what is the answer? 0. 0. 0 is the answer. Is it clear, kids? Yes, sir. Isn't that a nice problem made? Yes, sir. Sir, if it would intersect, then the infinite solution हो जाता ना. अगर intersect करता तो infinite solution आ जाएगा. Yeah. या क्योंकि बहुत जगह पे कट करता है ना फिर. Yeah, infinite. ना. है ना? Then they Yes, would have to sir. give a proper definite range, right? For the. See अगर intersect अगर करता suppose ना तो उसको बहुत जगह पे करता हो तो. हाँ. या ऐसा. They would have Intersect- given 0 to 2 pi or something. कि इतने में how many solutions? या, पर यहाँ पर हाँ तो उनको देना पड़ता. Yeah, yeah. देना पड़ता. Is it clear? So you are Yes. तो directly getting the y is equal to step of sin x. कुछ range नहीं दिया तो directly we can do ना. क्या बोल रहे हैं? So see, range is not given 0 to 2 pi or whatever. वो domain Or- is not given. हाँ. Sorry, domain. Yeah, and y is this step of sin x is equal to cos x. तो intersect होगा तो infinite solutions होगा ना. अगर 0 to pi दिया होता, अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट करता तो एक ही सॉल्यूशन होता. हाँ, yes, sir. But यहाँ पे दिया नहीं तो directly we could mark the option. Yes. Okay, But is sir, it, there's no other way of doing this, or like okay, because there is no other way. What is the other way? You tell me what is the other इतना way. long way and then at the end if you get 0, it's हाँ शरण देख, शरण यही तो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है शरण? प्रॉब्लम sir. ये है कि मैथमेटिक्स सबसे लेंदी पेपर होता है क्योंकि सॉल्विंग होता है बहुत ज्यादा. मेंस हाँ, में भी वही है, एडवांस में भी वही है. हाँ sir. इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप थोड़ा 5-10 मिनट चुरा लो किसी और सब्जेक्ट से, Yes, sir. अगर हो सके तो. इज इट ओके? Yes, sir. Okay. I think the advanced kids, can recollect one sum which I had done in permutation and combination. Okay, let's go ahead. Okay. Many times, the advanced questions, they come in some other format. यहाँ देख लो क्या लिखा है. X, उसमें 5 एलिमेंट है. Number of different ordered pairs. Oh yeah. First one. Y and Z such that can be formed such that Y जो है सबसेट ऑफ X है, Y सबसेट ऑफ X है, Z भी आपका सबसेट ऑफ X है,
और इंटरेस्टिंगली y और z में कुछ भी कॉमन नहीं है ना किड्स? Yes, sir. मतलब क्या हो रहा है आपको बताता हूं, देखो क्या होगा यहां पर y z okay and somewhere else okay now you tell me आपका जो y सबसेट ऑफ x है मतलब और z भी सबसेट ऑफ x है मतलब आपका y एंड z कहां से आने वाला है? यहीं से आएगा. डू यू एग्री? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो how this one can behave. This one can either go to 1 or go to z or does not go to anybody because what is my condition? Y And an empty intersection set Z is empty. Matlab, what is the situation? If y goes to 1, sorry, if 1 goes to y, then y cannot go to z. Do you agree? Yes, sir. Do you agree? Yes, sir. So this 1 can go to either y or it can go to z or it does not go only. Do you agree? Yes, sir. Next. So 1 can go in how many ways? 3. Three Three. ways. Similarly, 2 can go in how many ways? 3 ways. 3 ways. 3. Three. 3. Three. 3. So what is the answer? 3 raised to 3 5. raised to 5. हाँ ये एडवांस वाले याद है कुछ सम ऐसे किया था हमने The first sir. one only. एक सम किया था बट आई थिंक सबको समझ गया होगा कैसे हुआ है क्योंकि कंडीशन क्या है y और z x से आ रहे हैं और क्या बोला है y सबसेट ऑफ x है z भी सबसेट ऑफ x है और y और z में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 क्या हो सकता है या तो y के पास जाएगा या तो z के पास जाएगा तो किसी के पास नहीं जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. इसलिए 3 ऑप्शंस है 1 के पास. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, sir. Yeah, good. So, but in advance, we like did 3 raised to 4 plus 1. हाँ क्योंकि वहां पर और कंडीशन दिया था ना अनऑर्डर्ड पेयर करके लिखा था. Yes, sir. Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. चल आगे बढ़ते हैं. ये सब तो किया ना हमने? Yes, sir. Yeah, we have done it. Yeah. Okay, now let's go ahead. Now, some questions are really genuinely confusing. Like ये सब ना थोड़ा ध्यान इजी है लेकिन ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एक क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ना पहले तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. योर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. उन्होंने बोला है एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है. x belongs to real number for any a belonging a subset of R. उन्होंने g of a डिफाइन करके रखा. What is g of a? See, g of a में x belongs to real number. g of a is f of x only, ना? Is g of a f of x only, kids? Yes, sir. It's f of x only, by the way. And this f of x belongs to a. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. S is given. S belongs to 0 to 4. Okay, तो S का वैल्यू 0 और 4 के बीच में है. Then which of the following statements is not true? ये आपका क्वेश्चन है. तो ठीक है हम करते हैं. See what they are asking you to understand ना क्या क्या पूछा उन्होंने. सबसे पहले उन्होंने पूछा हमें एक मिनट. G of f of x, G of s, तो सब फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले हम f of s फाइंड कर लेते हैं. f of s. f of s मतलब now what is x का वैल्यू between 0 to 4? s का वैल्यू. Yes, sir. If I put 0 to 4, तो can I say this will belong to what? 0 to 0 to 16. 16. Do you agree? Yes, sir. ये काम आएगा याद रखना. नेक्स्ट g of s के बारे में बोला है तो g of s मतलब a के बदले s लिखूंगा मैं. तो अगर मैं a के बदले s लिखूंगा ध्यान से देखना तो आपको यहां पर क्या मिलेगा. अगर मैं a के बदले s लिख रहा हूं तो यहां पर मुझे f of s मिल जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. है ना. f of s मिल जाएगा. समझा क्या? हाँ, Yes, sir. एक मिनट f of s ही मिलेगा. एक मिनट g of It s. will be No. root x, no? हाँ या Okay. एक मिनट. g of s will be this guy. Okay. और x का वैल्यू क्या है यहाँ पर? x का वैल्यू आपका है एक मिनट I just write it down. g of a belongs to f of x. Okay, g of a is f of x and f of x belongs to a.
ठीक है. So your g of s will be, एक मिनट, g of s will be, a will be s. हाँ, chill. So f of x will belong to s. Do you agree? Yes, sir. G of s. So f of x will belong to s. Do you understand? Yes, sir. Now what is s का value? 0 to 0 to 4. So g of s will belong to what? minus 2 to 2. S will belong to 0 to 4 only. Do you understand? Arey, S, it belongs to S. So S will belong to 0 to 4 only. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Again I am saying, मेरे भाई, g of a is f of x and it belongs to a. So g of s will be f of x and it will belong to s. Do you understand? Yes, sir. So आपका जो f of x belongs to s, so s is 0 to 4. So this will belong to 0 to 4 only. Do you understand? Yes, Yes, sir. sir. So g of s belongs to 0 to 4. Does that make sense? Yes, sir. Good. Okay, ये भी हो गया और क्या पूछा है चेक कर लो. g of f of s. ठीक है, सब फाइंड कर लेते, फिर बाद में ड्रामा करेंगे जो करना हमको. ठीक है, चलो. Okay, next. Next is g of f of s. अब ध्यान से देखना. g of, in place of a I'll write f of x, f of s. तो यहां पर आएगा f of s x and it belongs to f of s. Do you understand? Yes, sir. Clear? Yes, sir. And f of s belongs to what? 0 to 16. So g of f of s belongs to 0 to 16. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. और क्या बचा, और भी चेक कर लो. f of g of s. f of g of s भी फाइंड कर लेते हैं. चलो कुछ और कलर यूज करता हूं. f of g of s. G of Hey s. audience, check it out now. f of x I'm already having. Do you agree? So this will Yes, be sir. g of s ka square. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Now g of s belongs to 0 to 4. हाँ के नहीं? हाँ, sir. So square will belong to what? 0 to 16. 0 to 16. So f of g of s belongs to 0 to 16. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. That's it, audience. Now you can have a look. देख लो कौन कौन इक्वल है यहां पर. f of s, g of f of s is same as g of s. Not at all. तो ऑप्शन ए गलत है. उन्हें पूछा क्या which of the following is not true, ना? Yes, sir. Oh, chill. Yeah. Okay. So पहला, g of f of s is equal to g of s. Not true. Equal है? नहीं. Equal है क्या ये? This is sir. not true, है ना kids? Yes, Yes, sir. sir. Now, g of f, ये तो आंसर मिल ही गया, फिर भी चेक कर लेते हैं. g of f of s. g of s does not belong to s. Yes, sir. True that. Does not Yes, true. This is true. True. f of g of s is not equal to f of s. No, not true. Not, no. It's coming True. false. एक मिनट. It's coming false, so हाँ, it is false, no? Not It is equal, no? Oh yeah, it is not true. तो ऑप्शन ए में क्या गड़बड़ हो गया? एक चेक कर लेते, रुको. f of g of s. f of g of s is s? No. No. That's correct. Is it? एक मिनट. f of g of s is same as s. Is it same Not as true. S? Not. So the Not question true. will be, should be, which of the following is true? So then B will be. क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो गया. एक मिनट रुको. यहाँ पर गड़बड़ हो गया. रुको. क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके बुक में लिखा है ऑप्शन ए एज आंसर. ऑप्शन ए कैसे आंसर है? एक मिनट. f of s, एक मिनट. f of s I've got 0 to 16, g of s 0 to 4, g of x 0 to 16 and this is, yeah, perfect है. सब कुछ perfect है. तो एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए पता है? Which or one of the following statement is true? So answer true. So answer should be option B, है ना kids? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा, ऑप्शन ए तो है ही नहीं. या परफेक्ट है. f of s 0 to 16 ही है.
g of x 0 to 4 है, g of x 0 to, हाँ perfect है अपना ये. Yeah. So basically question should be changed, है ना kids? Is it clear kids? Yes, sir. Yes, sir. So answer option B है, and question थोड़ा change कर दो. चलो ठीक है. Let's move. आगे बढ़ते हैं. Two sets A and B are under given, and A is a set of ordered pairs. It belongs to R cross R. आपका R cross R मतलब ये आपका डोमेन, ये आपका रेंज है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. Now what they are giving me is, this is what they have given it to me. So now किds सबसे पहले I can say A minus 5 is between -1 to 1. So if I add 5, so A will be between 4 to 6. Similarly, B minus 5 should be between 1 to -1, है ना? 1 to -1 के ठीक है, तो सेम ही आने वाला है. तो B will be between also 4 to 6. Now next is इसके बारे में बात कर लेते हैं. 4 times of A minus 6 the whole square plus 9 times of B minus 5 the whole square less than equal to 36. If I divide by 36, I get A minus 6 the whole square upon 9. I think it's pretty clear. It is the interior of the ellipse. Do you agree? Yes, sir. It's an interior of the ellipse. So if I take X and Y axis as A and B, suppose this is your A and this is your B. So ellipse का vertex is 6,5. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. 6,5 ये vertex हो जाएगा. तो basically, और ये आपका 3 है, तो basically A आपका 3 हो जाएगा, A आपका 3 हो जाएगा, B आपका 2 हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका ellipse हो गया. और आपका यहाँ पर क्या लिखा है? Set A में is between 4 to 3 6. less than. Of course, 4 to 6 is somewhere here only, है ना kids? Yes, sir. Inside only. See, 4 to 6 is somewhere here only, and ऊपर भी 4 to 6 will be इधर. ऊपर का पार्ट है ना kids? ये आपका कितना है? ये अगर आप उसको y को अगर आप 2 बोल रहे हो, तो ये आपका हो जाता है, हाइट कितना है? इसका हाइट इज 5. तो ये आपका 3 हो जाएगा, हाइट 3 हो जाएगा. ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, नो, समथिंग लाइक दिस इंटीरियर पार्ट विल कम. डू यू एग्री किड्स? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. The interior part should come, क्योंकि आपका A 4 and 6 के बीच में है, और B भी आपका 4 and 6 के बीच में है ना kids? Yes, sir. Yes. So it's an interior, right? So basically B is a A is a proper set of A. No, sorry, A, sorry. B is a proper subset of A, है ना kids? Yes, So sir. wouldn't it be the other way around? एक मिनट. B is a, oh yeah. A is a proper subset of B. Yeah. I wrote ulta. Yeah, sorry, I wrote ulta. Yeah, because A अंदर है ना B के. A is inside B. A is inside B. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. अब किड्स यहाँ पर जो मैंने वीडियो आपको दिया था ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. और ये क्वेश्चन नॉर्मली आई थिंक अर्जुन पुतली ने और किसी और ने पूछा है. पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं. यू लुक एट द ईयर. लुक एट द ईयर. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तो स्टॉप हो गया आना. ये तो पता नहीं किसने, हाँ ये भी हो, लेकिन लुक एट द ईयर. व्हाट इज द ईयर? Is it an old question? Yes. After 2013, I think, yeah, there has not been any question based on relations, first of all. So chances are very less. Still, you should know, because God knows if it comes. So I think आपने देखा होगा 3 टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं. एक होता है रिफ्लेक्सिव, है ना किड्स? एक होता है सिमेट्रिक, Symmetric. एक होता है ट्रांजिटिव, है ना? Yes, sir. और अगर तीनों होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस. Equivalent. रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब x और y दोनों कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू द रिलेशन, है ना किड्स? बोथ शुड बी सेम.
x and y. Yes, sir. Symmetry कब होता है? If a comma b belongs to R, then b comma a should belong to R. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Transitive. A comma b belongs to R. Then b comma a. Sorry. Because C. Yeah. Sorry. B comma C should belong to R. Then automatically what it implies? That B A comma comma- C A comma also belongs to R. Do you understand? Is it true? And if all three are true, then it becomes equivalence. Is it okay? Or is it okay? Is it okay? Yes, sir. Okay, now let's go ahead. R is a set of ordered pairs x and y belong to real number और एक रिलेशन दिया है. ये रिलेशन है x equal to wy where for some rational number w is a rational number. Now let's talk about reflexive first. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका? ये दोनों सेम होना चाहिए, x, y होना चाहिए, x, y, x होना चाहिए. हाँ कि नहीं kids? Yes, sir. तो अगर आप y के बदले x लिखोगे तो ऑफ कोर्स आपको ओमेगा मिलेगा 1. डू यू एग्री? हाँ कि नहीं? Yes, sir. एंड 1 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. डू यू एग्री? डू यू एग्री? अरे फॉर सम रैशनल नंबर सो इट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. हाँ कि नहीं? Yes, sir. सो रिफ्लेक्सिव है. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव. लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होने वाला, आप देख लेना. देखो कैसे वो ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक. लेट्स टॉक सिमेट्रिक. सिमेट्रिक नहीं होगा. देखते हैं सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा. सिमेट्री में क्या है? इफ x comma y belongs to suppose relation, then y comma x should also belong to a relation. है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. And this will not happen. Let's take an example to convince you. Why it will not happen? Just see. Suppose I take an example. X is equal to wy, right? Now suppose your x is Suppose your x is 0, okay, and your y is 1. Okay, so I get 0 comma 1. Is it okay? 0 comma 1 I have got. हाँ कि नहीं? Yes, sir. But will this be possible? No, sir. That will be impossible. Possible है क्या ये? No, sir. Audience, 0 equal omega 1. This is x and y का relation. And remember, omega is any rational number and x and y any real number. है ना? पढ़ लो. Yes, sir. So if I take x as 0 and y is 1, then 1 comma 0 should work for being symmetric. है ना? Yes, sir. But Yes, sir. it will never be possible that 1 will be equal to 0. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So it automatically means what? Symmetric नहीं है. तो automatically equivalence नहीं है. Yeah, tell me, yeah. So could you also do x is equal to y omega and y is equal to x omega and then just divide them? Yeah, not possible, no? Yeah, and then you that Yeah, you can take your like way. that will make it reflexive and not. Yeah, that's okay. But is it clear? Or is it Yes, clear? sir. Yes, yes, sir. So that's what I was saying. चलो अच्छी बात है. तो फिलहाल हमने देखा ये S is not equivalence. R is not equivalence. So option A तो चला गया यहाँ से. D भी चला गया. Now there's a fight between B and C. Now let's talk about S. Second one. S is what? Let's check it. S is an ordered pair of, M by N, P by Q. M by N. M by N and P by Q. M, N, P, Q are integers. M, N, P, Q belongs to Z. And what else? N and Q are not 0. That is okay.
and qm equal to pn. This is given. Interesting. qn equal to qm सॉरी यार क्या हो रहा है. qm equal to pn है ना kids. शुरू करें अभी. Yes, sir. Now good thing they have given something interesting. So can I say from here, at least from here I can say, at least before I just start my work, m by n is equal to p by q. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Now let's talk. सबसे पहले let's talk about reflexive. Reflexive में क्या होगा? m by n है तो ये भी m by n होना चाहिए, है ना kids? Yes, sir. और ये तो हो है, तो ये तो इक्वली है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अरे इक्वली है कि नहीं? Hmm. अरे they both are equal only ना? Yes, yes, sir. p by q Yes, sir. same as m by n only. ये reflexive है, is that true? Yeah. Because p by q is m by n only, so that side is equal. So reflexive है. Symmetric की बात करते हैं. Symmetric में क्या होता है? If m by n, comma p by q belongs to R, then what it implies? Let's by check. Q. Does ulta imply? Does ulta will work? And ulta works. This is p by q. This is m by n, है ना kids? Ulta work Yes, करते. sir. Does it work? Yes, it will work. Why will it work? Because your p by q is m by n, है ना kids? Yes, sir. Okay. And m by n is p by q. Do you understand? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. So it will work. Do you understand? Yes, sir. Okay. So m by n, p by q, it's an ordered pair. So p by q, m by n will also belong to that set only. Because of that condition, है ना? Is it okay? Yes, sir. Yeah, चलो good. Transitive की बात करते हैं. Transitive. What transitive says? If n by n comma p by q belongs to relation and p by q comma r by s belongs to some relation, then does m by n and r by s belong to this relation? Does it? Yes. Yes, it will. It will. है ना kids? It will. Do you Because agree? m by n is only equal to p by q. Yeah, because it will work because m by n and p by q is same only. Do you understand? M by n, p by q, p by q, r by. So can I say this will be equal to this only? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. It will work out. Do you understand? Yes. Yes, sir. Because of this condition, we are getting the answer in short में, है ना kids? Yes, sir. Okay, so it is transitive because of m by n and p by q are equal. तो अगर ये इसको belong करेगा, अगर ये इसको belong करेगा, by default m by n r by इसको belong ही करेगा. It will belong to r only. Is it clear? Yes, sir. Good, good. तो reflexive भी है, symmetric भी है, transitive भी है. So finally, what is your answer? C. Okay, option is C. I think option C हमें नहीं वो check करना पड़ा obviously. We had to check. Is it clear? Yes, sir. Good. Next. Now such question statement और statement वाले questions आना बंद हो गए हैं mathematics में because बहुत ही confusing हो जाते थे. उन्होंने बंद कर दिया है. So Statement. once again, come to the previous slide. Yeah. There's a before this. Yeah, done. So thank you. Okay. Statement 1. Let's write statement 1. Y minus x is an integer. अच्छी बात है. और उन्होंने बोले एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है. और उन्होंने बोला है सम रैशनल अल्फा की इक्विवेलेंस. अरे ये तो हमने अभी किया था ना कि वी हैव डन दिस. Yes, sir. It's a very Omega y simple. वाला. It is not. It is false, है ना? It's not. Yes, sir. Ah, This is false. So statement 2 is false. yeah.
तो I think we've got the answer because option C and D तो will not work only because option C and D both are true. Yes. The answer has to be option A only. Okay, but let's check statement 1 also. X and y minus x is an integer. ठीक, let's check it. Okay, so सबसे पहले reflexive check करेंगे. Reflexive. Of course, both same. So if I write x minus x, is it an integer? Yes. Yes. Yes, sir. Symmetric. If y minus x अगर integer होगा तो automatically आपका x minus y भी integer ही होगा. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Transitive. Next. अगर y minus x आपका integer है and suppose x minus z आपका integer है तो I think no doubt at all that y minus z should be integer. Do you agree? Yes, sir. तो ठीक है ना, तो आपका स्टेटमेंट 1 तो ट्रू ही हो गया है ना किड्स. Yes, sir. गुड. ओके, दिस इज द लास्ट सम. एक मिनट. Sir, could you come back? Sorry. या Yes, sir. Done. ओके, बट चांसेस ऑफ सच क्वेश्चंस कमिंग इज वेरी लेस, बट स्टिल यू शुड नो. हाँ, मणिपाल में मैंने देखा है, मणिपाल के एग्जाम में आता है. चलो, एडवांस में ये सब रिलेशन नहीं है, पता है ना आपको, सिलेबस में रिलेशन नहीं आता है. ठीक है ना. Yes, sir. A relation R on the set of the complex number is defined by this. मतलब क्या बोला, क्या डिफाइन किया उन्होंने, इसका मतलब क्या है, R is a relation between Z1 Z2 and this is a relation. Relation ये है असल में. What is the relation given actually? That Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 belongs to capital R. Is it clear? This is the relation given, real number. Is it okay? Yes, sir. ये रिलेशन आप बोल रहे कि चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं, चेक करो. तो ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव. ये थोड़ा बड़ा है, ले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. Which of the following is not true by the way? Okay, ठीक है. पहले किड्स, अगर रिफ्लेक्सिव है तो Z1 R Z2 है तो Z1 R Z1 ही होना चाहिए ना किड्स. दिस शुड वर्क. हाँ के नहीं? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. And does it work? Let's check it. It works. Z1 minus Z1 upon Z1 plus Z1 is equal to 0 and 0 belongs to real number. Is it true? Yes, 0 belongs to real number. Yes, sir. So it is reflexive. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. तो belongs to real number हो गया है तो true ही है ये. Reflexive है ये क्योंकि belongs to real number ही हो गया. देखो तो ये relation है and belongs to R only तो reflexive है तो this is true. Next, let's talk about symmetric. Symmetric. Symmetric में क्या होता है? Z1 R Z2 implies Z2 or Z1. Z2 R Z1. Let's check it. They have already mentioned that Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 belongs to is a real number. So can I say it equals some constant, some real number? चलेगा? Yes, sir. So okay, this belongs to real number. So I think there should not be any doubt now. If I had ulta also, and I should have ulta. This will be equal to minus k. Do you agree? Yes, sir. And minus k also belongs to real number only. Do you agree? Yes, sir. तो ये तो सिमेट्रिक भी हो गया, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो ये तो सिमेट्रिक भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और बोला है नॉट ट्रू. तो आई थिंक आपको पता चल गया आंसर क्या आने वाला है. Yes, sir. Now we'll D. It should be D only. तो आंसर इज इट इज नॉट इक्विवेलेंस. ट्रांजिटिव नहीं है. अभी ट्रांजिटिव का पार्ट बहुत लेंदी है, फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूं. ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है Z1 R
Z2 and Z2 are Z3, it should imply Z1 are Z3, है ना kids? Yes, sir. Now what is the relation they've given me is that Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 belongs to real number, है ना kids? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Now this is a bit lengthy, so you have to pay attention. Now see, I need to develop a relation between Z1 and Z3. I need to, now here, Z1 minus Z2 belongs to R, and also Z2 minus Z3 upon Z2 plus Z3 also belongs to R, है ना kids? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And my task is to derive this relation that even Z1 minus Z3 upon Z1 plus Z3 should belong to R, है ना kids? Yes, sir. तो ये करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अभी हमको, ध्यान दो अभी. Let me do one small thing. थोड़ा लेंदी है, सुनो. Let me say Z1 is X1 plus I Y1, Z2 is X2 plus I Y2, and Z3 is X3 plus I Y3. तो सबसे पहले let me put Z1. X1 plus I Y1. I'm just solving the entire thing, okay? You pay attention. This is X2 plus I Y2. This is X1 plus I Y1. X1 plus I Y2. अभी हमें ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये इमेजिनरी X2 plus I by 2. ओके X2 plus Y2. एक्चुअली क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके फिर ये इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, तो काफी लेंदी है ये. लेकिन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि आई थिंक हमें ऑप्शन मिल गया है ना किड्स. Yes, sir. Okay, but still for your information I'm just doing it so that you understand how to solve this particular problem. Now I think the denominator will be क्या आ जाएगा, देखो क्या है यहाँ. Okay, sorry, I should not do this. पहले मुझे इसको नीचे वाले को ना x plus iota फॉर्म में लिखना चाहिए पहले, ठीक है. Sorry, I can write this as x1 minus x2 plus iota common, y1 minus y2. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Y1 plus y2. Now let me multiply by the conjugate. Okay. X1 plus x2 plus iota times of y1 plus y2. x1 plus x2, ये प्लस के तो माइनस आ जाएगा, y1 plus y2. Is it clear? Yes, sir. I think we know a plus iota b and a minus iota b is nothing but real part square plus imaginary part square. Do you remember? Yes, Yes, sir. only real part will remain. Real part square plus imaginary part square. Real part square plus imaginary part square. और ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला टर्म एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो ये इसके साथ जाएगा, हाँ कि नहीं किड्स? Yes, sir. फिर ये इसके साथ जाएगा. तो मेरा फोकस खाली इमेजिनरी पार्ट से लेना देना है मेरा, तो मेरा ध्यान में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे रखने वाला हूं. ये जाएगा इसके साथ, तो मेरा जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा माइनस आयोटा टाइम. ध्यान से देखना, दिस गोज विद दिस. सो x1 माइनस x2 एंड y1 प्लस y2 आयोटा. फिर मेरा ये प्लस आयोटा ये हो जाएगा. ओके, ठीक है. ये माइनस हो जाएगा. ओके, ये तो ठीक है. मैं आई के साथ लेके आऊँ, आई बिकम्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 into x1 plus x2. Is it clear, kids? Is it clear? Yes, sir. Okay. तो imaginary part क्या होगा? Imaginary part is, so the imaginary part should be zeroed. Is it clear? Real है. Is it real? देखो लिखा है उन्होंने. Yes, This is real. sir. तो real पता imaginary part क्या होना चाहिए उसका? 0. तो imaginary part क्या होगा? Imaginary part will be y1 minus y2 x1 plus x2
minus x1 minus x2 y1 plus y2 है ना kids? Yes, sir. तो if I have to simplify this, हाँ तभी जाके आपको समझेगा, पूरा सिंप्लीफाई करने दो मेरे को. तो ध्यान I get here x1 y1 plus y1 x2 y2 x1 एक मिनट y2 x1 minus y2 x2. Is it clear? Okay, sorry क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट. Yeah, I'll write it properly. This is a minus sign, this is equal to 0. तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. Is it clear kids? Is it clear? Yes, sir. Next, similarly, x1 y1. So I get minus x1 y1 minus x1 y2 plus x2 y1 plus x2 y2. Now please cancel the common terms. x1 y1 goes, x2 y1 नहीं, y2 x1 goes, x2 y2 goes. So what am I left with? y1 x2. So I get y1 x2 equal to x2 y1. Is it clear kids? Yes, sir. तो ध्यान से देखना, अभी ऑलमोस्ट डन हो गया. अभी ये देखो, ये y1 एक मिस्टेक किया मैंने, एक मिनट x, ये दोनों सेम नहीं, ये यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है. रुको. y1 x2 y1 they are same only. So what wrong thing I have cancelled here? कुछ तो चेक कर लो. So you've cancelled x1, y2. x1 y2. Where is x1 y2? x1 y1 x1 y1 x2 y2 cancel. y2 x1. ये क्यों कैंसिल किया मैंने? एक सर मिनट, बाजू में है ना. So we have a minus x1, y2. x1 y2. एक मिनट. Let me check it. x1 y1 goes with this, ठीक है. उसके बाद x2 y2 goes with this. x1 y2 is minus and x1 y2 is plus, so this goes this. So I get what? I get. Sir, you Sir, made a dono sign plus. error. Yeah. What is the error? Sir, it should be minus y2 x1. You've written plus y2 x1 एक मिनट. on the white side. Oh, White side. या. एक मिनट. देखो, हम जब इक्वेट कर रहे हैं तो ये y1 minus y2 x1 plus x2 यहाँ पर आएगा. हाँ, तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है अभी? तो y1 x1. No, sir, while expanding. हाँ, let me check it here. y1 x1 y1 x2 x2 y1 minus x2 y2. Next, minus become minus sign. Now this goes here, become the minus sign. This should become the So it should be minus minus y2 x1. एक मिनट. The negative sign. The left hand side terms. First two. ये First two brackets वाला, हाँ. एक मिनट x1 y1 this. Oh yeah. It should be a minus sign here, है Yes, ना? sir. Yes, sir. Oh, that's what the mistake. Good. चलो, अच्छी बात है. Okay, तो ठीक है kids. I think तो ये जाएगा नहीं, तो ये y2 x2 है, y2 x1, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, है ना kids? Yes, sir. So I get x1 y2. So I got twice of both of them, है ना? I got twice of both of them. ये भी 2 बार हो गया, ये हाँ, भी sir. 2 बार हो गया, ठीक है. तो 2 times plus, I'll just write 2 times straight away. So 2 times of x1 y2 and 2 times of x2 y1, ठीक है. So 2 times of x1 y2 and 2 times of x2 y1. So what I get is x1 upon y1 equal to x1 upon y1 equal to x2 upon y2. Is it okay? Yes, sir. Yes, So okay, sir. so interesting. Now observe, अभी समझेगा आपको. So when I was saying z1 minus z2 upon z1 plus z2 belongs to real number, at that time I got this result, है ना kids? Yes, sir. Similarly, when I say z2 minus z3 upon z2 plus z3 belongs to real number, what result will I get? So x2 upon x3 y. equals to, yeah. I'll get x2 upon y2 Y. equal to x3 X3 upon upon y3. y3.
So now can I use these two guys together? So can I say therefore what? X1 upon Y1 is same as x2 upon y2. X3 upon Y3. Yeah. Yes, Yes, sir. sir. And this would imply what? Even this is true. Like, Yeah. And this would imply then automatically what does it implies? It implies that Equal. even Z1 minus Z3 upon Z1 plus Z3 belongs to real number. Real. Is it clear? yes, sir. Yes, sir. So actually ये करने की जरूरत नहीं थी, but I think ये करके आपको कुछ तो समझ गया होगा कि कैसे किया मैंने, है ना? Yes. Sir. Yes, sir. End of the day we had got the answer. Is it clear? Yes, sir. sir. ओके तो किस ये आपका डाउट सॉल्विंग यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है. ओके मैं फटाफट आपको जो पहला जो दोनों आपने अटेंड नहीं किया तो बता देता हूँ मैं आपको समझ जाएगा. स्टार्टिंग का दो आपने जो मिस किया था. चलो एक मिनट. ओके किड्स ये वाला आई थिंक कुछ बच्चों ने मिस किया था, मैं आपको बता देता हूँ पहले से. उन्होंने इसका पीरियड पूछा है, पीरियड. तो कभी भी अगर दो फंक्शन ऊपर नीचे, सपोज इफ यू हैव सम फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इफ यू हैव अ फंक्शन, तो क्या करना है आपको? ऊपर वाले का पीरियड फाइंड करने का, नीचे वाले का पीरियड फाइंड करने का और दोनों का एलसीएम लेने का. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर nx है तो n को निकाल के मैंने खाली इस पे फोकस किया सबसे पहले और इसका पीरियड फाइंड किया मैंने. और मैंने ऑब्जर्व किया x प्लस पाई जब मैं करता हूं तो f ऑफ x प्लस साइन पाई प्लस x विल बी माइनस साइन x एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. तो इज इट इक्वल? Yes, sir. तो पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड विल बी पाई. डू यू Pi. एग्री? Yes, sir. And but the question is nx. So period will be pi upon period upon divide the answer by coefficient of x, है ना kids? Yes, sir. तो न्यूमरेटर का पीरियड मुझे मिल गया. Now denominator period will be tan का पीरियड इज pi, tan का पीरियड इज pi and divide the answer by coefficient of x. Is it okay? Yes, sir. You get n pi. Now take दोनों का LCM. Is it okay? Yes, sir. और जब एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर फ्रैक्शन में होता है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. इज दैट ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. आई टेक n पाई को बाहर एंड 1 एंड n का एलसीएम हो जाएगा n. डू यू एग्री? Yes, sir. एंड n एंड 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1. इज इट ओके? Yes, sir. बट ऑलरेडी पीरियड इज गिवन एज 6 पाई. पाई कैंसिल, यू गेट n as 6. Yes, sir. गुड. एंड वन मोर आई थिंक यू ऑल हैड मिस्ड. ओके अब ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, पढ़ लो. f इज अ फंक्शन x y z in 1 2 3. तो ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है. 1-to-1 फंक्शन, इट्स अ 1-to-1 फंक्शन है, याद रखना. इट्स अ 1-to-1 फंक्शन such that only one of the following three statement is true and remaining two are false. मतलब ये तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन तीन में से एक ही ट्रू है और दो फॉल्स है. इज इट क्लियर? Yes, sir. One is true and the remaining are false. So I will have to take three cases one by one. First, let's take first is true and the remaining two are false. Second में first is false, second is true, third is false. Third case, initial two false and the third is true. Is it okay? Is it okay? Are is it okay? Yes, sir. Now first case पे आ जाओ. f of x is not 2 is true. अगर f of x is not 2 is true, it means f of x can be what? Either 1 or 3. Do you agree? Yes, sir. f of x 2 नहीं है, वो सच है, तो f of x क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 3 होगा. Is it clear? Yes, sir. f of y is 2 is false. मतलब f of y 2 नहीं है, f of y 2 है, वो false है. तो f of y क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 1 3 or होगा. 3. Yes, sir. Yes, sir. Next, f of z is not equal to 1 is false. What does it mean? So it is 1. Z equals to 1. It is 1 only. Now, if f of x is 1, then automatically f of x cannot be 1. Is that true? Yes, sir. And f of y cannot be 1. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. Because of 1-to-1 mapping. Is that true? Yes, sir. अगर ये 1 नहीं है तो ये तो दोनों 3 हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? Well, that's not possible. और दोनों 3 होना तो पॉसिबल ही नहीं है. Is that true? Yes, Yeah. sir. तो ये पहला वाला चला गया, not possible. Let's talk about case 2.
नेक्स्ट f of x 2 नहीं है, वो false है, तो f of x 2 है, is it okay? Yes, sir. f of y 2 true है, तो f of y 2 है, नहीं sorry इसके पहले, या sorry इसके पहले, या f of x is not 2 is false, f of x is 2 ना, Yes, sir. नहीं एक मिनट, f of x is not 2 is false, 2 और हाँ तो f of x is 2. हाँ, f of x is not 2 is false, so f of x is actually 2 ना, Yes, sir. and already f of y is 2, they given it is true, so f of y is 2, It's not possible. not possible only, do you understand? Yes, sir. तो केस 2 भी चला गया, केस 3 पे आ जाता. नेक्स्ट, f of x is not equal to 2 is false, so f of x is 2, is that true? Yes, sir. f of y is 2 is false, so f of y क्या होगा? Not 2. 1 1 or 3. or 3, is it okay? Yes, sir. f of z is not 1 is true, so f of z is either 2 or 3, is it okay? Yeah. Now but f of z cannot be 2 because f of z x is 2, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. f of z is 3. Now f of y cannot be 3, so f of y will be what? 1. 1. So now this all conditions are matching, हाँ कि नहीं? Yes, Yes, sir. So ये perfect बैठ गया, अभी देख लो अभी. तो your who is smaller, f of y is smaller then f of x and f of z. So सबसे छोटा कौन है? f of y. Then f of x and then f of z. So this become the final answer. Yes. Isn't this beautiful problem made? Yes, sir. Okay, so ये आपका हो गया. I think it is clear, kids, right? Yes, sir. और आगे का सम तो हमने I think किया था. ठीक है, एक मिनट. So I think yeah, the last part he did, like the greater than wala. कौन सा वाला? ये So वाला? how did like the this. So, अरे f of y is 1 ना. So it's only about the last one. Last में तो ये वाला. Yeah. ये कैसे आया? No, I'm saying like the 3, the green 3, that. This part. Yes, sir. 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3. So it's only for case 3. yeah, but case 3 is the only possible case. Case 3 is the only possible case, ना? Oh. ठीक है ना? Okay, sir. Okay. I couldn't hear the first. Yes, sir. ठीक है, चलो एक मिनट. Yeah.